Okay, so Homera, you have to teach ST1 on PopQ. Okay, doctor. Assalamu alaikum. I am Dr. Humaira, and you? हुमैरा बस बोलती जाओ, ओके, मेरी बस हो गई है. हाँ. Okay, Sadia. Nice to meet you. How's your training going on? Okay, good. So you are learning the new things, right? Okay, Sadia. I came to know that you are here to learn about the PopQ scoring system. Is that so? Yes, doctor. Okay, good. So in the today's session, we will discuss about the PopQ classification. It's important, and we will also learn to calculate the degree and the stage of the prolapse using the PopQ scoring system. Okay. Okay, Sadia, you can stop me and ask me if unable to follow me, right? So, uh, so there are, Sadia, there are many classification system for the pelvic organ prolapse, and the POPQ classification system is now widely used and endorsed by many international organizations like International Continence Society and American Urogynecological Society. Right. Uh, um, uh, Ma'am, the advantage of this PopQ scoring system is that it has less inter observational bias, and it also accurately stage the prolapse. मैम कहाँ पे बहुत छोटा है मैडम नजर नहीं आ रहा मुझे. एक मिनट. अच्छा मैंने यहाँ से तो मैंने यही बेहतर है. राइट सादिया. Yes. Right. So let's break down the POPQ system step by step. First, we have to do the patient preparation. Bladder and rectum should be empty. Proper positioning of the patient ideally it should be done in the lithotomy position or standing, whichever best demonstrated the prolapse. And we have to document the position. Consent should be taken verbally, and the equipment required are the SIMS or the split speculum measuring device, which could be the ruler, marker, swab, or a special stick, which is called the POPQ stick. Gloves and lubricant for the patient comfort. Then after taking the verbal consent, we ask the patient to empty her bladder, and we place the patient in the lithotomy position, and we measure the six defined point and three anatomical landmark which are fixed. Uh, 6 points are measured from the vagina, that is AA, which is the anterior vaginal wall, lower part of the anterior vaginal wall, and this is minus 3 centimeter from the hymen. It is measured in the minus. B is the most dependent part of the remaining lower remaining anterior vaginal part, and C is the cervix or the vaginal cup in hysterectomized patient. D is denote the posterior fornix, and AP denote the posterior vaginal wall, which is again 3 centimeter from the hymen. B is the most dependent part of the posterior wall. GH represent the genital hiatus, which is measured from the external urethral meatus to the posterior vaginal fourchette. Perineal body is measured from the posterior vaginal fourchette to the anal opening, and TVL is the total vaginal length. Are you getting me, Sadia? Yes, yeah. Right. This means that you are a good learner. So I will tell you the measuring techniques. Right. We consider the hymen is the fixed reference, or we consider it at 0 point. Above the hymen, we take the negative value, and below the hymen, we take the positive value. All the measurement done in the Valsalva maneuver except for the total vaginal length. Right, and if we use a standardized grid or the diagram to document the all measurement, there are four staging.
of the ProQ classification system. Stage 0 denotes no prolapse. Stage 1 denotes most distal part. When the most distal part is more than 1 centimeter above the hymen, it is called stage 1. Stage 2, when the most distal part is within 1 centimeter above or below the hymen. Stage 3 is the most distal part, which is more than 1 centimeter below the hymen, and but less than TL minus 2. And stage 4 is the complete eversion of the vagina, and it is more than TVL minus 2. Are you getting me? Yes, yes. Okay, there are common pitfall during the measurement, which could be the inconsistent position of the patient. So we have to document the position of the patient, incorrect reference. So we always use the hymen, not the enteroitus. And if hymen is not visible like in the multiparous patient, so we take the external urethral meatus as the reference point. Incomplete Valsalva maneuver ensure the patient is straining maximally, and overlooking other defects, assess for the urinary or the fecal incontinence and pelvic floor tone. Right. So now we will discuss how to apply this in the clinical practice, the benefit of this, and the use of the grid. Practical application is we examine the patient with the Sims speculum to retract the posterior to retract the opposite wall. While visualizing the anterior, posterior, and the apical compartment, we measure with the ruler or the special POPQ stick, which are available in the market, measure each point relative to the hymen. We document all the value on the grid. Then a stage is assigned according to the measurement, and we document all the measurement in the grid and in the patient notes. The benefit of the focus scaring is that it is a standardized method. It provides uniform language for describing the prolapse, improving communication, and the research purposes. And it has high inter and the intra-observer reliability, making it ideal for the clinical trial and the follow-up, as the previous classification system has biased. By using this system, we also it also allow the site-specific evaluation and monitoring over time. Are you getting me? Yes. Okay, Sadia. PopQ Grid is visual tool to record the all 9 measurement, and now I will tell you how to use it. The grid help visualize the prolapse pattern and the visibility. Now look at this diagram. Um, you can see AA, which is the anterior vaginal wall, lower part of the anterior vaginal wall. BA is the lower upper part of the anterior vaginal wall, and you can see the cervix. D represent the posterior fornix, and in the same way, there is AP and BP, genital hiatus in the perineal body, right? Yes. Uh, the Now I will tell you the normal value of these. Uh, the This system A is typically minus 3 centimeter from the hymen, and AP and A is minus 3 centimeter from the hymen in the normal anatomy. B, A, and BP is in the absence of the prolapse, and these are at the same level as the A and AP, means these value coincide at minus 3 level. See, in a uterus, the cervix is usually above the hymen. It is in the negative value, and after hysterectomy, the cuff should be at or above the hymen. D is only relevant if the uterus is present, and it is usually above the hymen. Genital hiatus ranges from 2 to 4 centimeter normally, and in the same way, perineal body is also 4 centimeter. Total vaginal wall varies between 7 to 10 cm according to the parity and the age. Sadia, there are some challenges and tips. Time and the skill PopQ classification can be time consuming and require the practice. We have to use the 3D models, video, and hands on workshop to improve the understanding and confidence.
and regular feedback and supervised practice are essential for mastering the technique. Right. How is the session, and how the teaching could be improved, or if there are areas you would like more information or practice, please let me know. Okay, there are these are the recommendation. I will provide the video links of this POPQ classification, and there are also the CPC hands-on workshop. You can attend this, and if you find any difficulty, you can contact me again, and we can learn it again. Don't worry. Have a Very, nice day. Take very care. good. Very good. Excellent, excellent, माशाल्लाह. So ये पूरा जो टीचिंग है दैट हैज बीन कवर्ड, यही टीचिंग में शामिल है। बाकी आपकी जो स्किल है कि किस तरह से इसको करना है, ठीक है। एक रिकॉल जो है नॉर्मल, जो एक पॉप क्यू की असेसमेंट है उसके ऊपर है। जो दूसरा रिकॉल है वो आगे है, यानी डिफरेंट पॉप क्यू ग्रेड्स हैं, उनकी इमेजेस हैं, उनको इंटरप्रिटेशन है। ये मैं दोबारा करवाऊंगी। नाइला, आपने हैंड रेज किया है, कोई क्वेश्चन है? मैडम मैं क्वेश्चन ये मतलब कि ये है ना कि 9 पॉइंट्स हैं, लेकिन जो 6 पॉइंट्स और 3 पॉइंट्स फिक्स। तो 9 पॉइंट्स में जो 6 पॉइंट्स हैं, मैं 9 पॉइंट्स की बात कर रही हूँ कि वो किसको हम कहेंगे। जैसे कि ये चार्ट बना हुआ है ना, तो इनको काउंट करेंगे तो टोटल 9 है ये। मैं बताऊं? बताओ। अच्छा, ये ये जो क्वेश्चन था। 9 पॉइंट है ना, ये हमें वजाइना के अंदर मेजर करने हैं। ये वेरिएबल होंगे और इसी से हमें पता चलेगा कि प्रोलैप्स कितना है। उसमें शामिल है ए यानी एंटीरियर वजाइनल वॉल आपका आ गया, पोस्टीरियर वजाइनल वॉल आ गई आपकी, और आपका आ गया सर्विक्स, एंड आपका आ गया पोस्टीरियर फॉर्निक्स। ये वेरीज करते हैं विद द प्रोलैप्स, विद द डिग्री ऑफ प्रोलैप्स। और जो फिक्स पॉइंट है वो हमारे पास जो हमारी सेकंड रो है, यानी कि जेनाइटल हाइटस, पेरिनियल बॉडी एंड टोटल वजाइनल लेंथ, ये है हमारे फिक्स पॉइंट। ठीक है, ये फिक्स पॉइंट इस तरह है कि इससे हमारे प्रोलैप्स पे कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि ये भी वेरीज करते हैं पेशेंट टू पेशेंट अकॉर्डिंग टू द एज एंड द पैरिटी। जैसे जेनाइटल हाइटस की भी रेंज होती है 2 to 4 सेंटीमीटर, पेरिनियल बॉडी की भी इसी तरह रेंज होती है, और वजाइनल लेंथ भी डिफरेंट हो सकती है। लेकिन ये फिक्स इस तरह है कि इससे कोई असर नहीं पड़ेगा उसकी। जी, इससे असर नहीं पड़ेगा प्रोलैप्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर, इसलिए इनको फिक्स पॉइंट कहा गया है। ठीक है, समझ आ गई। बहुत अच्छा बताया। डॉक्टर ठीक बोला है मैंने? क्या? डॉक्टर ठीक बताया ना? बहुत सही बताया, वेरी गुड। पाउच ऑफ डगलस हिस्टेक्टमी में नहीं मिलती। उसको कैसे फॉर्निक्स, हाँ, पोस्टीरियर फॉर्निक्स हमें नहीं मिलेगा। ये जो डी पॉइंट नहीं है, उसका बिल्कुल अभी नो डी पॉइंट। नो मीन्स वो जो तुम्हारा ये ग्रिड होगा ना, मैं अभी आगे तुम्हें ग्रिड दिखाऊंगी, वो जगह खाली होगी, उसी से ही तुम्हें जज करना है कि ये यूवी प्रोलैप्स की बात हो रही है या वॉल्ट प्रोलैप्स की बात हो रही है। वॉल्ट प्रोलैप्स है जी। यहाँ पे अभी जैसे आगे है ना, ये देखो ये वाला। आगे मैं बताऊं डॉक्टर, अगर अभी करवा रही हैं तो? नहीं नहीं, ऐसे ही बताओ। ये वाला अलग से मैं स्टार्ट करूंगी, ग्रिड्स वाला। हाँ वो, हाँ ये आया था ना। हाँ, ग्रिड्स वाला मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगी ना, अलग रिकॉर्डिंग में, क्योंकि वो अलग वाला। हाँ, इससे पूछना है कुछ, टीचिंग में कुछ पूछना है तो। मैंने पूछना है मैडम एक क्वेश्चन। जब हम टीचिंग करेंगे तो उसको बताएंगे कि पॉप क्यू है क्या, पेल्विक ऑर्गन कौन कौन से हैं, ये डिसेंड करेंगे, और पॉप क्यू है क्या, और इसे वो हम ये करेंगे। मैम जब उसने कहा कि उसे लिथोटमी पोजीशन में ये थोड़ा सा कॉन्सेंट लेंगे, मैम उसमें हम थोड़ा सा ये भी कर देना कि ब्रीफ सी हिस्ट्री लेके उसे लिथोटमी पोजीशन में डाल के उसका ब्लडर एम्प्टी करके फिर स्टार्ट करेंगे। मैम हिस्ट्री का थोड़ा सा नाम ले लें कि हम टच कर लें, रिस्क असेसमेंट, उसका कंप्लेंट्स, मतलब टीचिंग में भी हम इस तरह कर ले। वैसे तो हम लोग बाकी में करेंगे, ऐसा ना हमसे रहे ना, और इस बात को नेगेटिव उसमें ले बहुत लें। अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री बताया ना, फिर उसके बाद हम स्टार्ट कर लें। बहुत अच्छा पॉइंट है कि थोड़ी। हाँ डॉक्टर सादिया, जो ग्रेड वाला है ये हम कल ना कर लें?
It's यार already very late. डॉक्टर प्लीज हम लोग आज ही करेंगे प्लीज यार, हम लोग कल नहीं। डॉक्टर आगे मुहर्रम में ना हमारे पास नेटवर्क नहीं होगा 9-10 मुहर्रम को, तो प्लीज आज नहीं, या कल शाम को करवा तो दें हमें। नेटवर्क आता है, तुम लोगों का क्यों नहीं आता शाम को? नहीं आएगा डॉक्टर, नहीं आता मैडम आज ही नेटवर्क, करा 9-10 मुहर्रम को प्लीज। नहीं आता। अच्छा अच्छा, रिलैक्स हो जाओ। ये कौन था नहीं, जो कह कल रहा तो था? आएगा, 8 है, कल आएगा, नेटवर्क होगा कल। कल आएगा लेकिन 9-10 को नहीं आएगा, सैटरडे संडे हाँ नहीं तो आएगा कल कल नेटवर्क, वो करा तो देती हूँ, नहीं, कोई इशू नहीं है। हाँ कल करवा मैडम दो। आज ही करा लेना प्लीज, कल मेरी क्योंकि ड्यूटी। मैम ये अच्छे वाले करने वाले स्टेशन है और ये इस टाइम काफी लेट ये हो गया है, अच्छा तो मेरे करवा नहीं, रहे ख्याल हैं। में आज कि ही कल हमें करवा लें, आज आ, जितना हो रहा है अगर सब एग्री है तो आज और कल करवा लें क्लास, मैम सैटरडे आज संडे ना लें आप क्लास। कल करा आज लूंगी, करें सैटरडे संडे नहीं लूंगी, खैर है, कल करा लूंगी, टेंशन ना लो। मैडम, कल ड्यूटी जी है मैम, हमारी। थैंक यू। हाँ अब किसकी ड्यूटी है, कौन जो है वो आज ही चाहता है सिर्फ यहाँ पे मैं पेमेंट? हुमा, मैं आज चाहती हूँ मैं। हुमा भी आज चाहती हूँ, मैं भी। और एक और लड़की है सानिया, वो भी आज चाहती है। तानिया कौन आ गई, कहाँ से आ गई? आज आयशा, आयशा गायब है। मैडम आपने वोटिंग का कहा है ना, तो मैं अपने कैंडिडेट ज्यादा कर रही हूँ। आशा बश है। और उस वोटिंग में कल वाली मैं भी हूँ। ओ, अच्छा आप यस एग्जॉस्ट मैम, हो कल गई है तो फिर मैडम करेंगे बस मैंने प्लीज। अब, कैसे। मैं अभी पता है हुकूमत क्या, ही बदल। मेरी बात सुनो, मेरा पीछे से यूपीएस टी 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 शुरू हो चुका है, लाइट सुबह से नहीं थी। अच्छा ठीक है डॉक्टर, आप एग्जॉस्ट हो ठीक, गई होंगी एग्जॉस्ट नहीं, कल, मेरा लेकिन कल क्लास यूपीएस ले बीच में लीजिएगा। बंद होगा। कल थोड़ा, मैडम हाँ मैडम कल कितने बजे आप लेंगी क्लास? थोड़ा फिर अर्ली हो सकती है मैडम हाँ मेरी कल तो यहाँ। मैं अर्ली ले लूंगी इंशाल्लाह, ठीक है। मैडम मैडम बात सुने मैडम, प्लीज प्लीज मैम, मेरी 7 बजे यहाँ के 7 बजे ड्यूटी स्टार्ट होती है, यानी आप लोगों के 8 बजे। हाँ तो मैम आप लोगों के 8 बजे से अर्ली आप क्लास ले सकती हैं। मैं ले सकती नहीं हूँ डॉक्टर, 6 को ले लो। शाम में सब मैडम लोग। आप लोगों शाम में के तो काम होता है। 7 बजे, मैम आप लोगों के शाम 6-7 बजे आप क्लास ले सकती हैं, आप लोगों के मैं ले सकती पाकिस्तान। हूँ, सब अगर एग्री हो जाए ना, सब एग्री हो जाए। हाँ 7 बजे ले डॉक्टर लें, जी जी। प्लीज शाम में तो फ्रेंड। बिजी होते हैं जी मैम बहुत ठीक है, डॉक्टर। हाँ 7 बजे। ठीक है मैम, 7 बजे, हमारा यहाँ पे ठीक, 6 बजे होंगे, मैं ले लूंगी। ठीक है, लेकिन ठीक। मैडम ठीक है, कितने घंटों की होगी? 1 घंटे की होगी वो ना? एक होगी, ज़ाहिर है एक ही स्टेशन है, अब उसका रह गया ठीक ना। ठीक ठीक मैडम, मैडम प्लीज सात डॉक्टर बजे फिर ये वाला तो मॉड्यूल नेक्स्ट वीक पे चला जाएगा। नहीं, क्यों नेक्स्ट में जाएगा, मैं तुम लोगों को अभी ये जो यूरोडायनेमिक्स है ये सारा दे दूंगी, उसका मॉक जो है मंडे को पूरा मॉड्यूल का मॉक मारिया लेगी। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है अब मैम, इसमें कल पैसरीज, इंशाल्लाह 7 बजे। अब जल्दी इसका जल्दी कोई डॉक्टर पैसरीज दे दो। यूरोडायनेमिक जो है, हाँ, यूरोडायनेमिक तो बहुत समझने वाली चीज होती है, वो तो बहुत ही वॉलेटाइल होता है, जल्दी से समझ बहुत ही नहीं आता, वोलेटाइल उसी होता वक्त ही है, समझ जाता है। वो समझने से तो ज्यादा वो रटने की चीज है, जानू, रटा। रटन मुझे तो समझने की चीज लगती है, ये बहुत मुश्किल से समझ आने वाली लेकिन समझने की चीज होती है। ठीक है। तो डॉक्टर फिर आप वो कर लेंगी कल नहीं, नहीं कल पॉप क्यू है और पेसरी, दो चीजें रह गई फिर। हैं, पॉप क्यू के सारे, चलो पेसरीज एक कर लो आज। यस मैडम, पैसरी आज कर लें, कल सिर्फ पॉप हाँ, क्यू कर लीजिए 7 से 8 बजे तक। हाँ बिल्कुल, पेसरी स्टीचिंग, पेसरी स्टार्ट करो, कोई हिम्मत करो। मैं करूँ मैं? हाँ हाँ करो। ठीक है मैम, जरा सा इसको सामने कर दें, मैं देख के पढ़ लेती हूँ। हाँ पूरम, पूरम। ओके, बस जल्दी जल्दी कर देती हूँ, ठीक एक है मैडम। मिनट, हाँ मुझे एक मिनट छोड़ो। लisten। जी मैम। हेलो। हेलो। डॉक्टर का यूपीएस बंद हो गया लग रहा है। ओ, अब क्या करें गर्ल्स? वॉइस वेट नहीं करते आ हैं रही। 5। उनका गर्ल्स मैं करूँ? यूपीएस की आई थी ना, आवाज दे रहे हैं, यूपीएस शायद बंद हो गया। हाँ भाई, फिर क्या स्टार्ट करें? करो। हमारी लाइट भी आ गई, लेकिन फिर हाँ भी जी आप हाँ जी। स्टार्ट ओके ओके ओके। Hi, my name is Dr. Huma Khan. I'm here senior registrar in this ward. Your good name? Okay, nice to meet you. How is your training going on? Okay, all are help cooperative. Okay, so dear, today I'm going to give us this teaching lesson on the pessaries.
Okay. May I know why you are interested to learn this topic? Okay. Do you have any understandings? No. Okay. I'm going to start. So during my session, if you want to interrupt me and ask me anything, I will appreciate. Okay. So first of all, what is pessary? Just I want to tell you, pessaries are basically intravaginal devices used to support the prolapse pelvic organ and relieve the associated symptoms such as vaginal bulge, heaviness, urinary difficulties, and so on. So they are the mainstay of a conservative management for a pelvic organ prolapse, especially in the women who are not fit for this surgery or not suitable for the surgery. You are getting me? Okay, fine. So basically, what are the types of pessaries? So there are different types of pessaries, including ring pessary, shelf pessary, gel horn pessary, cube pessary, donut pessary. Okay, ring pessary is here, they are kept here. I'm showing you with them. I will show you. You can take it and check it. Okay, so ring pessary is a simple, flexible pessary. Okay, it is used for mild prolapse and ideal for sexually active females. Okay, mostly young females or who are sexually active. So shelf pessary is a firm shelf-like device, and it is for the advanced stage prolapse and also for old or sexually not active or less sexually active females. Okay, gel horn pessary. Okay, this is a flat disc with a central stem. Okay, so for severe prolapse we use it, and when other types fails to work. Okay, the fourth is cube pessary. This is a cube shaped pessary, and basically it works on suction based phenomena and severe prolapse we use, and it requires for frequent remover for cleansing and other things. Okay, like then donut pessary. This is a large donut shaped pessary, large vaginal capacity. In which vagina is flexible and have large capacity, we use it, but other pessaries fails or slip due to any reason. So are you getting me? How many types? Yes, yes, good, good. You are a very good learner. Okay. So selection depends upon the prolapse severity, vaginal capacity, sexually active or not. Okay, and patient's own preference. That is the most important thing. Okay, so first of all, for the we will when we are going to insert the pessary to a patient, we will take a brief history. Okay, a brief history of our presenting complaints. What are the presenting associated bowel, urinary problems, any infections, have she used pessary before, what is accessible, what are the complications, whether she is sexually active, and rest of all, like we will rule out some risk factors, allergies, and history of any pelvic radiology, radiotherapy, or any surgery. Okay, in order to judge the vaginal elasticity, then we have to examine the patient. Okay, in examination we will just take the verbal consent of the patient from the patient. We will empty her bladder and then we'll do our examination. Hello, Yes. are you listening to me? Yes, So, yes. for pelvic examination in a good exposure with the help in the presence of the chevron or nurse, I will assess the prolapse. First of all, which degree of prolapse is it? And you know well what is POPQ system. If you don't know, I will tell you later on. But as POPQ is the gold standard tool for the measuring the prolapse. Okay, then we will look overall hygiene, health, any infection active, any discharge, any atrophy of vaginal mucosa. Okay, then we will measure pelvic floor strength of the muscles, and we will if there is like atrophy and vaginal mucosa atrophy, then we can manage it before giving pessary, because it is one of the cause of her symptoms. Maybe her symptoms, other symptoms like will be relief. Okay, so for putting pessary, we will check. We will give the. We will insert the pessary to check and uh, trial, check and trial method. Okay, first we will first of all we will put our two fingers. I will part the labia, and we will check the elasticity of the vagina. Then we will open the pessary, we will hold in our hand, and we will put it posterior to the symphysis pubis. Okay, so you have to take care of the
some few things. First of all, it should be like it should be not too much tight. Okay, there should be one finger you are able to insert between the vaginal wall and the pessaries. Okay, then you will ask the patient, and you have to lubricate it. Okay, must lubricate it. Then you have to ask to cuff the patient. You will tell her to walk. And you will check like this size is appropriate or not. Okay, ma'am, next slide करें, कुछ भूल गई हूँ. Okay, so the thing then you will counsel her about the follow up and the replacement of the pessary. If it is pessary, she can replace it by herself, or in the case of cube pessary, she can remove it for the cleaning like this. Otherwise, few pessaries are just they need healthcare professional assistance. Okay, so you will tell her about the follow up. What will be how will the follow up in the first week? She have to come after one week first time. Okay, on the follow up, you will check about any complication, any like any discomfort. Is she's fine, she's going well at it. Then on the further review, you will take after 3 to 6 months. Okay, to check any erosion. Hello. Yes, yes. To check any erosion, ulcer, infection. Okay, and or any there are, because there are many complications also. It can be impacted pessary, it can cause infection, fistula, anything can be complication. So the education of the patient regarding exertion and removal of the pessary is a very important key thing. Okay, so it will be suitable for her daily life activities, and she is able to remove it and reinsert it whenever she needs. Okay, Okay. so you are getting me? Yes. Okay, okay, I'm happy that you are getting me. I have told you about complications also. So I will share with you some audio and video links. You can further learn about the pessaries and their indications. Okay, so the summary of today's session is that pessaries are effective non-surgical option for the pelvic organ prolapse. Take a thorough history and perform examination. Choose a type and the size based on the prolapse severity, vaginal capacity, and patient's own preference. That is the most important point. Okay, and teach the self management to the patient, and also appropriate if it is appropriate, and ensure her regular follow up. Thank you so much. Thank you so much. Very excellent. So बहुत अच्छा टीचिंग के जो important points थे we have covered, and you have to continuously stay verbal with the ST1 जिसको आप पढ़ा रहे हैं. और जिस जी तरह से बताया कि ये है take it in your hand, see this is the ring type, as you can see it's just like a ring, and this is the cubicle, you can see it just like a cube. इस तरह से उसको दिखाते हुए और वर्बलाइज करते हुए. वेरी गुड.